A big embarrassment for Congress ahead of the UP polls. Priyanka Maurya, the poster girl of Congress Ladki Hoon Lad Sakti Hoon campaign, has joined the BJP. Maurya has alleged that the distribution of tickets was rigged in Congress and the party used her face and social media following for the campaign. Once the poster girl of Congress, she is now donning saffron. Priyanka Maurya, the face of Congress's Ladki Hoon Lad Sakti Hoon campaign, dumped the grand old party and joined hands with the BJP. ये है मेरी फोटो, मेरा पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे फेस को इस्तेमाल किया गया है, मेरे नाम को इस्तेमाल किया गया है, सोशल मीडिया पे मेरे 10 लाख फॉलोवर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है, मुझे मोहरा बना करके, मुझे फेस बना करके टिकट तो हमसे वोट तो लेना चाहते हैं ओबीसी समाज का, लेकिन टिकट देने में इन्हें प्रॉब्लम थी। ये धोखा हुआ है, मैं इसको यही स्टॉप करती हूँ और आज मैं भाजपा में जुड़ी हूँ इस रीजन के साथ कि जो मैं दायरा बढ़ाना चाहती थी लोगों की मदद करने का, वो मुझे पार्टी सपोर्ट करेगी, मैं लोगों तक पहुँचूंगी, राष्ट्र हित में कार्य करूंगी। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, क्या आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। Disgruntled over being denied a Congress ticket for UP polls, Priyanka Maurya has hit out at Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra. कांग्रेस में मैं काफी समय से पूरी मेहनत से लगी हुई थी, कार्य कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से मुझे आहत किया गया, सिर्फ नाम दिया गया है कि लड़की हूँ, एक स्लोगन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ने का भी मौका नहीं जहाँ पे मिलता, ऐसी जगह पे समय अपना देते रहना मुझे समझ में नहीं आया। Earlier, Priyanka Maurya had alleged that Congress's distribution of tickets ahead of UP polls was rigged. हमारी स्क्रीनिंग हुई, मेरे साथ 24 प्रत्याशी टोटल प्रत्याशी थे, सबकी स्क्रीनिंग हुई, सबसे बूथ कमेटी की लिस्ट मांगी गई और ऑब्जर्वर्स भी आए, कहा गया ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार ये टिकट दिया गया है। Congress has rejected the charges, claiming tickets are being given on merit. एक्चुअली देखिए, टिकट्स कई लोग मांगते हैं, लेकिन सिर्फ महिला होने के नाते किसी को टिकट मिल जाए ये भी संभव नहीं है। हर जगह महिलाओं को दे दिया जाएगा तो ऐसा तो 403 है, फिर 100% की बात नहीं, हमने 40% की बात की। Congress General Secretary Priyanka Gandhi, in an unprecedented move, had announced her party will give 40% of its tickets to women in Uttar Pradesh. But Priyanka Maurya's charges of rigging in the ticket distribution process have come as an embarrassment for Congress. Bureau Report, India Today. Priyanka Maurya, the face of Congress's Ladki Hoon Lad Sakti Hoon, has now joined BJP. India Today exclusively spoke with her after she came to the saffron fold. She told India Today she was a deserving candidate and Congress had given the ticket to a parachute candidate. Let's listen in. प्रियंका, जो आप बीजेपी का स्कार्फ पहने अभी बैठी हैं, मैं यही कह सकती हूँ क्या कि कांग्रेस ने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। देखिए, स्लोगन दिया गया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगी कि लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जिस पार्टी में वहां सिर्फ बात की गई कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की, प्रियंका जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों के माध्यम से मैंने अपनी आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो ऐसा चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई है कि वो उनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है कि लड़कियां किस तरीके की परेशानी से गुजर रही हैं और लड़ रही हैं, किस तरह से उन्हीं की पार्टी की एक लड़की अपने हक की बात कर रही है जिसके साथ धोखा हुआ है और उसकी ही बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये एक कैंपेन ही बन के रह जाएगा, क्योंकि महिलाओं के हक की सिर्फ बात की जाती है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी महिलाओं की बात कर रही हूँ। ये सिर्फ कैंपेन चला करके महिलाओं को ठगने का तरीका है। मगर प्रियंका, यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने जो 40% औरतों को प्रॉमिस किया, उनमें से फर्स्ट लिस्ट जब आई उसमें विमेन को दिए भी उन्होंने टिकट्स, आपको नहीं दिए। पर क्या आपको प्रॉमिस किया था? आप क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको टिकट मिलेगा जो फिर नहीं मिला?
जी हाँ, यहाँ पे सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था। हम लोग पूरी जी जान से अपनी विधानसभा में मेहनत करने में लगे हुए थे 170 सरोजनी नगर विधानसभा से, लेकिन एकदम से पैराशूट लैंडिंग होती है किसी कैंडिडेट की, जिसको इसी वायदे के साथ ज्वाइन करवाया जाता है पार्टी कि उसको 170 सरोजनी नगर विधानसभा दिया जाएगा। लेकिन मुझे डॉक्टर प्रियंका मौर्य को विश्वास था एक नाम पे जिसको कहा जाता है प्रियंका गांधी, और इस विश्वास के साथ मैं अपनी विधानसभा में मेहनत करते रहे कि वो देखेंगे कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन डिजर्विंग है, उसको मिलेगी टिकट। लेकिन मेरी मेहनत के बावजूद उनके टॉप की रिजल्ट जो उनके ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट थी उसमें भी साफ लिखा हुआ था कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य संभावित जीत प्रत्याशी, सबसे बहुचर्चित फेस डॉक्टर प्रियंका मौर्य। हर रिपोर्ट में मेरा नाम मेंशन होने के बावजूद, मैंने जो एग्जाम्स थे उसको पास किया, उसके बावजूद मुझे प्रमोट नहीं किया गया। इस चीज की मुझे तकलीफ है और आप लोगों के माध्यम से मैंने कोशिश की अपने आवाज को उन तक पहुंचाने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके वो देखना ही नहीं चाहती है कि रियलिटी किस तरीके की है और कैसे उन्हीं की पार्टी की महिला अपने हक के लिए लड़ाई करती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। Congress has fielded model actor Archana Gautam as its candidate for the Hastinapur seat, but the candidate is being subjected to misogynistic trolling on social media. India Today spoke to Archana, who is unfazed by the trolling. Actor turned politician Archana Gautam has got an early glimpse of the murky world of politics. Soon after the Congress picked her as candidate from Uttar Pradesh's Hastinapur seat, Archana, who has participated and won in beauty pageants, has been subjected to misogynist comments by her political rivals. हस्तिनापुर एक बहुत प्राचीन और पौराणिक और पूज्य भूमि है, और उस पूज्य भूमि से जिस महिला को बिकनी के नाम से कोई अवार्ड मिला हो, जो महिला एक मॉडल रही हो और जिसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हों, उस तरह की महिला को अगर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो हिंदू महासभा सिर्फ इस बात का विरोध कर रही है कि कम से कम उन्हें हस्तिनापुर जैसे पूज्य स्थान से इस तरह की मॉडल को अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए था। The 2018 Miss Bikini India winner is unfazed. Backed by party leader Priyanka Gandhi Vadra, Archana is taking the attacks on the chin. हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है। वो महिला संघर्ष कर रही है, क्या कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ, मैं विकास की बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से हस्तिनापुर को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनको हल्का बनाना चाहते हैं, सिर्फ क्योंकि वो महिला है। अगर वो पुरुष होती, किसी भी पार्टी की होती, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के प्रश्न उनसे करते। प्रियंका दीदी ने मेरा बचाव नहीं किया है, प्रियंका दीदी ने हर उस महिला का बचाव किया है जो देश के लिए लड़ना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती है। उस महिला को स्ट्रॉन्ग बनाया है उन्होंने, जो हमारी बेचारी जो बहनें हैं वो अपने घर तक सीमित रही हैं और आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, अपने जो ख्वाब हैं वो सवार नहीं पा रही है समाज के डर से, तो उन्होंने उसका बचाव किया है। हर लड़की को कपड़े पहनने का अधिकार है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई उसने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं या उसने सूट क्यों पहना है, उसने साड़ी क्यों पहनी है। आप किसी का कैरेक्टर उसके कपड़ों से जज नहीं कर सकते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनती है तो ये लड़की कैरेक्टर लेस है, तो ये गलत है। ये मतलब एक समाज में जो दिया हुआ मैसेज है वो बहुत गलत है। तो इस चीज़ से हमारी भारत को आगे बढ़ना चाहिए, भारत की जनता को आगे बढ़ना चाहिए। The voters of Meerut said their voting doesn't depend on the candidates' professional choices. जो उनके कपड़ों को लेकर टोल किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नीयत में हमेशा खोट रही है। और ये जो जितने भी लोग इस तरह के हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की IT सेल से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही लोग जो है महिलाओं पे भी जो है उन्होंने अत्याचार पहले भी किया है, और इसी तरह से जो है उनकी टीम एक वहाँ पे वर्क कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, जो उसको जो है बेवजह जो है मुद्दा बनाती है। Some of Archana's political rivals have also extended support to her in the fight against misogyny. ये कपड़े वपड़े किसी के व्यक्तिगत मामले हैं, इसमें अगर कोई संवैधानिक प्रतिबंध है तो उस पर कुछ कहा जाए, बाकी क्या कहना। महिलाओं का मान सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को
उन्हीं के मान सम्मान के लिए, उनके रक्षार्थ हमें जो कुछ हो सकता है वो काम करने चाहिए। Archana's resolve is strong, but the personal attacks on the actor turned model has rekindled the debate on the falling standards of political discourse in India. Bureau Report, India Today. A mega clash, 2 heavyweights and 1 seat. It's Bhim Army Chief Chandrasekhar Azad versus Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in State of War, Uttar Pradesh. A vocal critic of the BJP, Chandrasekhar Azad, is all set to contest polls as an independent candidate. This after his recent announcement where he ruled out an alliance with the Samajwadi Party. Even before Yogi's Gorakhpur announcement, the Dalit leader had openly challenged Yogi, claiming that he would contest against the Chief Minister. Gorakhpur is the hometown of Chief Minister Yogi Adityanath. Yogi had been the MP from Gorakhpur Lok Sabha seat since 1998 until he became the Chief Minister in 2017. Yogi is the second Chief Minister to contest from the seat that the BJP has dominated for decades. A big buzz around the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's entry into Uttar Pradesh poll fray. India Today scoops exclusive details from where the SP chief Akhilesh can fight the polls. Akhilesh Yadav is mulling 3 seats as his options to enter into crucial UP polls. Our next report will give you all of those details. Sources in the party indicate Akhilesh Yadav could fight from any of these seats: Mainpuri Sadar, Chibra Mau or Gopalpur. The biggest hint that he might contest elections came from Akhilesh Yadav himself. At a press meet, Akhilesh Yadav said his electoral contest may happen before Yogi Adityanath. मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा और चुनाव पहले होना चाहिए योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव. While elections in Azamgarh will be held in the 7th phase, Yogi Adityanath's home constituency, Gorakhpur, will vote in the 6th phase. Akhilesh had earlier said he would not contest the polls and would focus on every seat in the state. According to sources, the pressure on Akhilesh built after UP Chief Minister Yogi Adityanath decided to contest from Gorakhpur. अखिलेश यादव जी पर अब इतना दबाव था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नामुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी पराजय सुनिश्चित है. Akhilesh is an MP from Azamgarh and he has never contested in a state election. If he were to contest, the question then is whether Mayawati and Priyanka Gandhi Vadra would be also tempted to enter the fray. Bureau Report, India Today. Arunachal Pradesh MP Tapir Gao on Tuesday alleged that People's Liberation Army of China abducted a 17-year-old boy from the state. According to defense sources, after receiving this information, Indian Army contacted PLA through a hotline and told them that a youth lost his way while collecting herbs. Sources also said that the Indian Army told the Chinese Army to locate the youth and return his back as per protocol. The teenager, identified as Miram Taron, who was allegedly abducted from Lungta, Jor area under Siongla area. According to the BJP MP, his friend escaped from PLA and reported his abduction to the authorities. Arunachal Pradesh MP Gao has requested all agencies of the government and requested to step up for his early release. The present incident is also happening after the Chinese renamed 20 villages in Arunachal. Is it coincidence or a pre-planned act? Time will tell. But the government of India must act fast and forcibly to ensure that the youth abducted by the PLA is returned safely. 5 youths in September 2020 who had gone hunting in the upper Subansari district. However,
the PLA released them after 10 days. We are hopeful that this boy who has been abducted by the PLA, who had gone for hunting and for collection of herbs, will be released soon. After news of Arunachal teen Miram Taron being allegedly abducted by the Chinese army, politics over it have emerged. Congress leader Rahul Gandhi attacked the Modi government and said that just ahead of Republic Day, an Indian youth has been abducted by China and Prime Minister is silent on the issue. He also added that Prime Minister's cowardly silence was his statement and extended support to the family of Miram Taron. Soon after that, other Congress leaders joined Rahul in attacking the Modi government. Congress MLA Sachin Pilot alleged it was the first time that foreigners were coming in and kidnapping citizens. Congress MP Manikam Tagore also attacked Modi and said that after the abduction, why is Prime Minister Modi not showing his 56-inch chest to China? Congress spokesperson Randeep Singh Surjewala said Chinese army has transgressed and abducted citizens in Arunachal. हमारे जो ये लड़का है उनको किडनैप किया गया है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे अरुणाचल में अभी भी चीन के लोग घुसपैठी कर रहे हैं. Foreigners are coming into our country and abducting citizens. It's actually symptomatic of what's happening on that border. As you know, China has made intrusions into our land and there is a deafening silence from the government of India. The fact that the individual was abducted and a BJP MP is asking for its release leaves nothing more to be said. I'm of the opinion that our borders need to be more secure, and all the bravado and chest thumping that the government of India does in Delhi, they should actually come out and tell the people the truth, take strong actions, and whatever strong action the government of India takes, we'll support them. But it can't be that continuous intrusion into our territory, abducting of our citizens. I think it's a grave and serious matter, and the government of India should take immediate action. The latest incident is absolutely worrying. That if an Indian citizen has been abducted by the People's Liberation Army, then under those circumstances, government of India, our force commanders on the ground must talk to the People's Liberation Army, must get that boy back unharmed, because this abduction of Indian citizens by the Chinese PLA is something which is not acceptable at all. It is not the Congress leaders or the media which is asking questions, but the BJP MP from Arunachal has asked for help, emergency help yesterday night, but till of now there is steady fast silence from the Prime Minister, Mr. Modi. Why Mr. Modi is afraid to take the name of China itself? A trend that's taking social media by storm, fox eye looks. Well, what exactly is this trend and what's the buzz around it? Chaiti Nirula brings us this report. Just when the world was turning more pro-aging and embracing the natural, the Omicron-related work-from-home Zoom meetings seem to have put the focus back on the face, highlighting insecurities of many. While that's completely human in an age of Instagram filters, it makes you wonder what is the secret behind some perfect jawlines that don't have the double chin. In fact, the internet is abuzz with trendy fox eye looks on social media with some gravity-defying faces. Bella Hadid, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Doja Cat, Eva Mendes. They make one wonder what is the secret behind the fox eye looks and defined jaws. While it's no secret that Hollywood loves its plastic surgery, there are non-surgical lifts that have taken over the world of cosmetology. For instance, thread lifts. Been there for a while but gaining prominence now. Threads are really trending world over. They have been there for a long time. I've been using threads personally since 2013. The type of threads have
evolved over a period of time. We started off with PDO, then we did silhouette threads, then we did aptos threads, and now we have these bidirectional polycapronolactone threads. So they are getting better and better by the day. Threads are medical sutures, if you will. They're threads, essentially, that you put under the skin. You insert them under the skin, and they slowly dissolve while creating a wound healing mechanism to stimulate a lot of collagen and elastin. What it is an easy, quick, nearly painless way to create natural tightening of the skin. You can do it on the neck, on the jawline, on the double chin, on the cheeks, on the nose to lift the nose. You can do it on the brows for that cat's eye. We can even do it a little bit for the lip. We can do it for breast lifting, for butt lifting, for tightening of the tummy, especially post-delivery, for tightening of any area of the body. It is usually debatable whether aesthetic trends are here to stay or not. But for now, it's surely trending thanks to the fox-eye look on Instagram handles. Thread lifts have actually become part of the normal world in our aesthetic centers. Thread lifts are well known amongst clients, well known amongst doctors, and yes, they are trending essentially because they work. You see good benefits, the downtime is minimal, the side effects are also minimal, and it's quick and easy and you can get results. But how long do these even last? Well, depending on the type of the threads and the number of threads that have been put in, they will last. For example, PDO threads will last for about 6 to 8 months. Aptos threads would last for about a year. The polycapronolactone threads are said to last for even up to 2 years. While you may be sure tempted to look a certain way thanks to Zoom meetings and picture-perfect Instagram looks, there are some who should avoid these procedures. The people who should avoid getting a thread lift are ones who either have such severe sagging that the thread lifts just won't show much of a difference, or if you have an active autoimmune process, if you have a tendency to form scars like keloids, and also if you're allergic to any of the materials of the threads. There are many different materials of the threads, so you'll have to check with your practitioner. The trend seems like it's here to stay, as it somewhat enables the aspirational supermodel look without the plastic surgery. In New Delhi, Chaiti Narula for India Today. And that's where we leave it on this edition. For further news and updates, log on to indiatoday.in. You can also download the app.